अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। कौन सा चैनल है भाई? रिएक्शन गुरु चैनल। कैसे हैं अली भाई? आई एम परफेक्टली फाइन। और आप सबको हैप्पी दशैन। तो आपका आज से फेस्टिवल हो रहा है, क्योंकि हमें पता चला कि 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। और एक तो अच्छा हुआ वीकेंड पे आ गया। हाँ, हम बना भी सके और देख भी सके। छुट्टियां भी चल रही होंगी और हमें टाइम से पता चल गया, क्योंकि अगर ये मिड डेज में आ जाता तो वी वुड नॉट बी एबल टू विश यू गाइस। होपफुली आपका दिन अच्छा गुजरा होगा, आपने होपफुली नए कपड़े पहने होंगे। हम तो अपनी ईद के हिसाब से आपको बता रहे हैं, हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, यू नो। अभी तक नो आइडिया कि इसमें क्या होने वाला है। एंजॉय करते हैं और आप लोगों का अभी ये फेस्टिवल है, इसके बारे में अभी देखेंगे कि क्या आप लोग करते हैं इसमें और क्या क्या होता है, क्योंकि इतना आइडिया नहीं। चलें जी, अभी आपके साथ ये वीडियो देखते हैं और वीडियो को करते हैं एंड तक enjoy. So enjoy your festival live भी और वीडियो भी। Started. The great festival. In the small landlocked country of Nepal, nestled at the foot of the great Himalayan mountain range, an ancient religious custom is observed every year during late September into early October. The 15 days of celebration occurs during the bright lunar fortnight, ending on the day of the full moon. The great Hindu festival known as Dashain is the longest and most auspicious festival on the Nepalese annual calendar. Suspicious? Dashain celebrates the inevitable victory of virtue over vice, of truth over untruth, and justice over injustice. The goddess Durga, known as the goddess of victory, is worshipped with great devotion. अच्छा, दुर्गा पूजा हमने नाम बहुत सुना है, शायद इसी इवेंट की होती हो। During the Dashain, Durga is worshipped with multiple pujas. A puja is the act of showing reverence to a god, a spirit, or another aspect of the divine through invocations, prayers, songs, and rituals. An essential part of puja for the Hindu devotee is making a spiritual connection with the divine. Along with the puja, abundant offerings and thousands of animal sacrifices are made for the ritual of holy bathing and drenching the goddess for days in blood. Animal sacrifices. The celebration is attended by rich and poor and Nepalese of all caste and creed throughout the whole country. For the wealthy and well-off, it is a time of great celebration. Buying presents, giving gifts, and consuming vast amounts of meat and food during feasts with family and extended relatives. Wow, मतलब food वाला festival होने वाला है। For the extremely poor, it is the rare occasion of dining on delicious and abundant food. Most of the people are too poor to eat meat regularly and regard the feasting as a great treat. But it can also be a curse because it is very difficult for them to afford the traditional trappings of the great celebration. Many are left destitute after the festival is over due to their extravagance in offering worship to the goddess Durga. The first 9 days of the Dashain celebration commemorates the fierce battle between the goddess Durga and the demons. On the 10th day, the demons disguised as water buffalo are slain, and then 5 days of celebration follows, symbolizing the great victory with the blessings of the goddess. Victory की celebration. In preparation for the Dashain festival, homes are cleaned and beautifully decorated, even with a new coat of paint. Relatives begin their journeys back to their family homesteads for the large gatherings. The markets are filled with shoppers seeking new clothes, gifts, and enormous supplies of temple offerings for the gods, as well as food for the family feasting. Enjoyment का Thousands of sheep, goats, chicken, and water buffalo are rounded up and brought into the city and villages in anticipation of the great slaughter.
The streets leading up to the day of the sacrifice are lined with goat vendors who sell the sad-faced animals to families who participate in the ये ritual. तो इनकी उस तरह की ये बकरा ईद ही हो गई जिस तरह हम करते वही हैं। सोच रहा था On मैं। motorcycles, squirming goats are sandwiched between the driver and the passenger. ये हमारा They are also होता tied है to the top of ईद पे। bus roof racks as they make their way back to the villages. On the 8th day of the festival, called Maha Asthami, fervent worship and sacrifice to Durga and Kali increases with blood sacrifice from animals to appease the fierce gods. Many Hindus fast as they prepare for the evening of the great slaughter called Kal or Ratri, or the dark night. Thousands of goats, black. sheep, and water buffalo are sacrificed at the mother goddess temples in far-flung villages and in the big cities, often until dawn. By morning, the floors of the temples run deep with blood from the sacrificed animals. There is no trace in Hindu culture or Hindu scriptures that allows supporters to sacrifice animals. Killings are always forbidden in the Hindu religion. But there is a long tradition of sacrificing animals to Durga and to Kali, the goddess of destruction. On the 9th festival day, called Maha Navami, the temples of the mother goddess are filled with people dressed in colorful attire from dawn to dusk. People dance to traditional Hindu music, and offerings are made to the various religious statues. Also on the 9th day, the god Vishvakarman, the god of creativity, is worshipped. Factories, machinery, instruments, cars, planes, trucks, and motorcycles are given sacrifices so the objects themselves will receive a blessing from the goddess Durga for a special protection against accidents and harm to the occupants for the coming year. On the 10th festival day, or Vijaya Dashami, the day goddess Durga was conqueror over the demons, a special celebration is held in the family homes. It is the day that Tika and Jamara is offered from the elders as a sign of a blessing to the younger family members. On this day, the women prepare a mixture of rice, yogurt, and vermilion together, and sometimes add a beer, a red dye common in Nepal, as a symbol of the blood which ties the families together. The elders place the tika mix on the forehead of the relatives to bless them with abundance in the coming year. Tikas. Sacred yellow grass, called jamara, is bestowed by the elders atop the heads of those receiving the blessing when the tika is put on their foreheads. Small amounts of money are also given by the elders along with the blessings. 15th day. On the 15th day, which lies on the day of the full moon, Dashain ये इतने ends. दिनों का On the फेस्टिवल last बहुत day, बड़ा people stay फेस्टिवल home and rest up from their 2 weeks of festival and fun. The Hindu goddess of wealth, Lakshmi, is worshipped and she is invited to visit each and every one for लक्ष्मी their future लक्ष्मी वो हमने prosperity. कहा क्यों ना लक्ष्मी घर आ रही है। After Dashain, everyone settles back to normal. People are ready to work to acquire virtue, wealth, and power. With the annual celebration of the great festival of Dashain, all Nepalese remember the message, good always wins over evil. Good always win over the evil, no matter what the situation is. बिल्कुल सच ये हमेशा जो है ना वो जो बातिल होता है ना उस पे गालिब आता है। ये एक चीज़ देखकर तो आज होता है कि यार हर रिलीजन जो है आपको क्या सिखा रहा है। सिमिलर चीज़ें हमारा रिलीजन हमें सिखाता है, सिमिलर हिंदुइज्म सिखाता है, सिमिलर क्रिश्चियनिटी, मतलब हर रिलीजन यही सिखाता और है, इसलिए सच बोलो। बेसिस जो होती हैं रिलीजन की बिल्कुल। सारी पीस उसी पे होती हैं।
बड़ा एक तो ये है कि डिफरेंट रिलीजन से बीइंग फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम बीइंग मुस्लिम जब हम ये चीज़ें देख रहे हैं तो काफ़ी डिफरेंट रिलीजन्स का अंडरस्टैंडिंग का वो हमें पता चल रहा है कि क्या क्या वहाँ पे होती हैं, क्योंकि हम एक ऐसी कम्युनिटी से हैं जहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिसेस ऑब्वियसली नहीं होती, लेकिन आप लोग ऐसी कम्युनिटी से हैं जहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग से और बड़ा एक बीइंग बिल्कुल एक नई चीज़ है हमारे लिए इस तरह की चीज़ें देखना, एक्सपीरियंस करना क्या क्या हो रहा है अभी सेक्रीफाइसेस का हमें कभी भी नहीं पता चलता अगर हम ये रिएक्शन वीडियो बिल्कुल। और टोटली वो बता भी रहे कि हिंदुइज्म में फॉरबिडन है ये सेक्रीफाइस, लेकिन इस फेस्टिवल के लिए वो लोग करते हैं। तो इस तरह अब जैसे इंडिया में वो लोग नहीं करने देते, तो उनको भी समझना चाहिए कि मतलब दूसरों के रिलीजन में अगर अलाउ है तो उनको करने दें। तो दूसरों के रिलीजन को मत छेड़ें, आप अपने के लिए जो वो हमारे एक पाकिस्तानी में उर्दू में एक मुहावरा बोला जाता है कि अपने मज़हब को छोड़ो ना और दूसरे मज़हब को छेड़ो ना। बिल्कुल। तो हर किसी मज़हब की ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे अभी हम ये वीडियो जो जिस तरह भी कर देख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करने की बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए दूसरे रिलीजन को। और हमारी तरफ से भी ये मैसेज है, एंजॉय योरसेल्फ। मुझे ये बताएं कि इतने ज़्यादा दिन ऑफिस बंद रहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता होगा। 15 डेज काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है तो बंद होते मुझे नहीं लगता। वह इतनी छुट्टियां कौन देता है यार, तो ये इतनी नहीं होगा। लेकिन ये होता होगा कुछ दिन हो तो होती होंगी आपको, बीच में वीकेंड भी आ जाते हैं और फिर कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो आपके टोटल कुछ स्टार्ट में जो हमने देखा वहाँ तो ये था कि मिलाने वाले फेस्टिव गिफ्ट शिफ्ट्स हैं, फिर आपके सेक्रीफाइस करके लोगों में मतलब वो डिवाइड करते हैं। जैसे यार वो गोश्त कहाँ जाता है ये भी वो कह रहे थे, वो जो पुअर लोग हैं उनमें भी जाता है ऑफकोर्स। तो आप लोग खाते हैं मतलब खुद भी तो खाते होंगे, जैसे हम ईद पे खुद भी खाते हैं बारबेक्यू और बहुत तिक्के बन रहे होते हैं। तो ये वैसे भी वो शीप और ज़्यादा गोट्स नज़र आ रही थी उनके करके, तो उनके शीप्स के जो बनते हैं ना तिक्के, लेवल होता है उनका एक। तो चले जी, वीडियो वाज इंटरेस्टिंग अमेजिंग। आजकल जो हम देख रहे हैं इन दिनों वीडियोस वो बहुत ही अमेजिंग आ रही हैं, सजेशन में भी अच्छी आ रही हैं, देखने में मज़ा आ रहा है, थोड़ा समझने में भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह की वीडियोस आती रहनी चाहिए आपकी तरफ से और हम लोग इसी तरह रिएक्ट करते रहेंगे। तो आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।